Hello everyone, good afternoon all of you. Today we are starting with our next topic of kinetic theory of the gases. Yesterday we started this one unit, kinetic theory of gases. So today we will start our next topic. Yesterday we discussed where we will use this one kinetic theory of the gases. Okay, and there is a different law of the gases we discussed there in our last class. So today we will start pressure due to the ideal gas. Okay, how their pressure is exerted by the gas molecules when we are taking any container, and in this one containers all are moving here and there randomly. Yesterday we discussed their different assumptions. Okay, different assumptions of the gas molecules we have done, that gas molecules are moving here and there. They are the moving with the speed that is high, large amount of the speed as compared to the size of the particles, and they are not having attraction and repulsion between these particles. Okay, so different assumptions we have done. Assumptions means better not in exact property of the molecules, but they are the same concept assume only about gas molecules. So today we will discuss about their how much pressure is exerted due to the ideal gas. कि ideal gas कितना pressure exert करेगी. These particles molecules are there in the container. So as we are taking this one container in a one symmetric way. ओके कि बहुत सारे रैंडमली क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, देन आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वी विल एज्यूम वन मॉलिक्यूल्स एंड दिस वन विल बी एज्यूम इन अ वन डायरेक्शन. ओके कि इनमें से क्या है कि एक मॉलिक्यूल हमने एज्यूम किया, लेट अ वन एटम दैट इज मूविंग विद अ सम वेलोसिटी, and that velocity can be along y axis, can be along x axis, can be along your z axis. कि x के along भी मूव कर सकता है, आपका y के along भी मूव कर सकता है और z के along भी मूव कर सकता है. Moving in this direction and strike on the ball, then it will be come back along this one and its velocity will be remain constant same only, but due to the direction then its velocity become vx, vy or vz. ओके तो हमने क्या लिया है, कंटेनर लिया है बेटा, एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं, नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, नॉट हैविंग बाउंडेशन ऑन देम, बट आउट ऑफ दीज ऑल मॉलिक्यूल्स देन वन मॉलिक्यूल इज देयर दैट इज मूविंग लाइक दिस वन वे. ओके सो हम एज्यूम करें, लेट कंसीडर 1 mole of gas in container so 1 molecule container. Now 1 molecule of velocity along x-axis vx. Okay, this one particle can be move along बेटा x-axis, y-axis, z-axis. अभी मैंने बताया कि कोई बाउंडेशन नहीं है, पार्टिकल्स x के लोग भी मूव कर सकता है, y के लोग भी मूव कर सकता है, z के लोग भी मूव कर सकता है. So for find out pressure, we will take this one particle is moving along x-axis only, कि x के लोग मूव कर रहा है. So along x-axis vx. So due to after the collision, now particle that molecule moving with this one, after some time this particle collide with wall, कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेगा, देन come back along same path means along x-axis and follow elastic collision property.
ओके कि हमने ये भी पढ़ा था बेटा अजम्पशंस के अंदर कि आपका जो है गैस मॉलिक्यूल्स है वो किसको फॉलो करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि अगर वो कोलाइड करेंगे आफ्टर द कोलिजन देन दे विल कम बैक अलोंग द सेम पोजीशन, अपनी सेम साइज को रिगेन कर लेते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज द इलास्टिक नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमने गैस मॉलिक्यूल को अज्यूम किया ये इस डायरेक्शन में जाएगा और वापस स्ट्राइक करके बॉल से स्ट्राइक करके वापस आएगा। So going from there to there, after come back, then it will follow the collision, elastic collision. Okay. So now total momentum of particle whose mass per unit volume is m. Okay, so momentum we can write there, total momentum we can write there, p is equal to beta final momentum minus initial momentum. फाइनल ये वाली मोमेंटम होगी अगर माइनस वी एक्स है तो फाइनल मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स। वापस आ रही है तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव। एंड p इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, mass of this one particle m we have taken, and their velocity moving with vx, then it will be your initial velocity. So total momentum, how we can find this one? Total momentum we can write there p final minus p initial. Final momentum we can write there minus vx, and initial momentum we can write there minus m vx. Okay, minus already will be there, so here we can write beta minus 2m vx. This one is a total momentum of the particle that is moving in the container along x-axis only. So this one our momentum. So this one follow the, according to the law of conservation, according to law of conservation of momentum, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन वी कैन से बेटा मोमेंटम ऑफ दिस वन, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, देन हियर we can write there according to law of conservation of momentum, p equal to here 2m vx. Momentum of this one we can write there 2m vx. So here this one we can write here, after this one total momentum बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने की इनिशियल मोमेंटम, वापिस आने की फाइनल मोमेंटम. सो टोटल वी कैन राइट देयर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ईयर माइनस वी एक्स, इनिशियल ईयर एम वी एक्स. सो टोटल हमने निकाला तो क्या आ गया हमारे पास माइनस 2m vx. This momentum we can write like this one. Here we have to find out force. Initially I am telling you how we can find force beta. अब momentum आ गई, momentum से force कैसे निकलेगा? First let us see this one. P equal to pressure, we have to find out pressure. We can write there force per unit area is your pressure only. Pressure equal to force per unit area. Okay, force per unit area, then force we can write there dp by dt. Yes na, dp by dt, change in momentum per unit time is equal to force. We can write there rate of change of momentum, we can write there force only. Okay, so we can write there change in momentum per unit time, then force will be there. After that force, then force per unit area, then pressure will be there. Okay, देन मोमेंटम ऑफ द वन पार्टिकल, दिस वन, ये किसके लिए है, एक पार्टिकल के लिए जिसका मास क्या है, m है. अब इसके लिए क्या हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल लाई करते हैं बेटा, लाइक दिस वन हियर मैनी नंबर ऑफ द गैस पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर फॉर टोटल मास. इफ एरिया ऑफ दिस वन कंटेनर वी आर टेकिंग a area and this one your vx velocity moving in your del t time. Okay, in del t time. So here we can write there let particle moving for del t time, del t small time, del t we have taken. Okay, in area
इन एरिया ए ऑफ कंटेनर, क्या है कंटेनर का एरिया क्या ले रखा हमने, ए ले रखा है. सो हियर वी कैन राइट देयर container A area del T time in this one. Now if n is number of molecules lie, number of molecules per unit volume, n क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ आफ्टर दिस वन हियर वी कैन राइट बेटा n इक्वल टू योर del T, number of molecules we have to find out. So from here your A, your del T and your n. Okay, this one is total number of, that is total number of, ये क्या है total number of molecules lie in container whose volume is A del T. Okay, whose volume is A area. Okay, here will be beta x also, Vx also will be there. Here A Vx also will be there, because your volume is equal to your area into your third side. Yes ना, वॉल्यूम इंटू थर्ड साइड, थर्ड कौन सी साइड है, y और z के लोग तो हमने एरिया a ले लिया, बाकी बची क्या x के लोग हम कैसे साइड निकालेंगे बेटा. सो वी नो अबाउट दिस वन, योर Vx इज इक्वल टू योर डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस ना, सो डिस्टेंस वी कैन राइट देयर अलोंग x एक्सिस. सो अलोंग x एक्सिस वी कैन राइट देयर Vx वेलोसिटी into which time, del T time we have taken. So complete volume equal to this one. Okay, so complete volume this one, A Vx del T in number of molecules and per unit volume. So here whose volume is equal to your A Vx del T. ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं. क्लियर. इसके बाद क्या निकालेंगे हम, टोटल वॉल्यूम दिस वन, देन P इक्वल टू दिस वन. अब एवरेज निकालेंगे. नाउ some molecules are moving, some particles are moving in positive x direction, positive x axis, and some particles come back after strike on wall, after strike on the wall. Okay, so here this one you will be given na beta. Here in this one picture, see, some are going in this direction, some are coming in this direction. So average find करेंगे. average के लिए क्या कर देंगे, half of this one total number of molecule lie in that volume. जितने इस कंटेनर के अंदर जितने भी molecule lie कर रहे हैं उनका average. So some particles are moving in positive x direction, some are coming back in this direction. So here now average molecules lies in container. जो कंटेनर के अंदर लाई कर रहे सब मॉलिक्यूल्स, उनका एवरेज निकालेंगे. सो एवरेज वी कैन राइट देयर 1/2 एरिया Vx del T and your n molecules. Okay, so now total momentum TOT, total momentum of these particles which are lie in this volume. ओके, जो पार्टिकल्स इस वॉल्यूम के अंदर इस कंटेनर के लाई कर रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 1/2 a Vx del T n
दैट इज इक्वल टू योर m2mvx। ओके, यहाँ निकाला था ना हमने टोटल मोमेंटम एवरेज p इक्वल टू 2mvx, दिस वन वी आर यूजिंग देयर। ओके हियर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा बेटा, कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल एज्यूम कर रहे हैं, उनमें से हमने सिर्फ एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया, ये पार्टिकल एक्स के लोग मूव कर रहा है, तो उनको क्या बाद में वाई और जेड के लिए फाइंड कर लेंगे। सिर्फ हम फिलहाल फाइंड कर रहे हैं एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में कितना वो मूव कर रहा है। क्लियर? तो उसके बाद क्या हमने मोमेंटम निकाली, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल टोटल मोमेंटम आ गई एक पार्टिकल के लिए। बट एक पार्टिकल तो लाई नहीं करेगा, कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, तो उन सब के पार्टिकल्स का नंबर हम फाइंड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिकल्स लाई कर इस कंटेनर के अंदर और कितने वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं। क्लियर? सो टोटल number of the molecules that we are assuming per unit volume that is lie in that container, तो साथ उसकी मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवरेज निकालने के बाद इसको टोटल मोमेंटम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर द मल्टीप्लाई देन वी विल सोल्व दिस वन, 2 2 to cancel out, then here left your a vx square del t your n, this one vx square na, and here will be equal to your m। so this one average of momentum came आफ्टर दिस टोटल मोमेंटम। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल मोमेंटम आ गई। अभी डिस्कस किया था मोमेंटम से फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स से क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। सो हियर नाउ यूजिंग दिस वन हियर, एज वी नो फोर्स इक्वल टू हियर चेंज इन प्रेशर, change in momentum to the time, rate of change of momentum to the time। so by using this one we can write their force equal to, right here put value of p equal to a vx square nm del t, ये हमारे पास आ गया, एज इट इज पुट कर दी, डिवाइड बाय योर टाइम। ओके, चेंज इन टाइम, देन दिस वन टू दिस वन कैंसल आउट। सो फोर्स विल लेफ्ट हियर f इक्वल टू a vx square nm, क्या है, a vx square nm। I think this one left ना, you can check it, a vx square nm। ये पास हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया। अब फोर्स से, सो अकॉर्डिंग टू definition of pressure equal to force per unit area is known as the pressure। pressure क्या होता है, force per unit area is known as the pressure। so using this one, force equal to this one, now put value of force in your this one relation in your pressure। okay, pressure के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P equal to your a vx nm डिवाइड बाय your a। ओके, सोल्व किया, a to a कैंसल आउट, सो प्रेशर विल लेफ्ट हियर vx स्क्वायर nm, राइट। ओके, तो प्रेशर हमारे पास क्या आ गया, vx स्क्वायर nm। ये प्रेशर बेटा, ये एक पार्टिकल, उन पार्टिकल्स का है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच आर मूविंग अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, जो सिर्फ एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं। बट पार्टिकल्स, molecules are moving randomly along x-axis, y-axis and z-axis। ओके, जो तीनों एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, then this one we will take p equal to this one। after that here pressure we can write there, molecules are moving randomly along x, along y, along z, so we can write there beta, we know about this one vx square along y। अब ये x के along है बेटा, y के along होता तो सेम होती वेलोसिटी, along y axis vx, along z axis vx square। okay, so average we will find there, average will be, how we can find this one here, average of this one vx square plus vy square plus your vz square and divide by your 3।
and this one we will assume beta c square by here 3. ओके इन सब की वेलोसिटी सभी एक्सिस के अलोंग लाई करे तो इन सबको क्या एज्यूम कर लेंगे, c के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, और वेयर c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वेयर c इक्वल टू योर रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, c को हमने ही एज्यूम कर लिया. ओके सो दिस वन इक्वल टू, नाउ हियर प्रेशर हमारा ये आया था, अब हमने ये इनका एवरेज निकाल लिया बेटा, कि एवरेज क्या निकाला कि पार्टिकल एक्स के लोग नहीं, पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं गैस पार्टिकल, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमने बाउंड करा कि सिर्फ एक्स के लोग ही मूव करे, वाई जेड के लोग ना मूव करे. सो विदाउट बाउंडेशन दे आर मूविंग रैंडमली. तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया कि एवरेज वेलोसिटी ये हो सकती है, कैन बी एक्स, कैन बी वाई, कैन बी जेड. सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से एवरेज निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास प्रेशर क्या आ जाएगा, यूजिंग दिस वन. नाउ हियर वी आर पुटिंग दिस वन वैल्यू. Now from equation first, इसका नेमिंग डाल लेते हैं बेटा here, this one our first equation. So here we can use there P equal to Vx square nm, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. ओके तो इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, P we can write there 1/3 c square nm. ओके स्क्वायर नोट, that will be c only बेटा, स्क्वायर तो हमने यूज कर लिया ना, कंप्लीट को ही हम यूज कर रहे हैं. P इक्वल टू यार 1/3 c nm. ओके सो आफ्टर दिस वन वी कैन राइट बेटा दिस वन योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस वन मास ऑफ वन पार्टिकल. ओके वेयर वी कैन राइट देयर m इज मास ऑफ molecule, okay, and n equal to your number of molecules lies per unit volume में कितने molecules lie कर रहे, that we will write there n. So we can write there nm equal to your m by v. Okay, that is total mass per unit volume lies in container, कि कंटेनर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करे पर यूनिट वॉल्यूम. सो वी कैन राइट दिस वन हियर m by v. Okay, number of mass, total mass per unit volume lie this one, then we can write there m by v. Okay, so as we are putting here mn, this one mn ना, ये हमने चेंज कर लिया बेटा m by v, क्योंकि m क्या ले लिया हमने, टोटल मास. ये क्या था, सिर्फ मास ऑफ वन पार्टिकल, और n क्या थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. यस ना. सो मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस वन टोटल मास per unit volume in our container. So this one we can write here P equal to 1/3 mnc. Okay, this one came na c square, mnc square only. So after this one here, remove this one. Now P equal to here 1/3 mass per unit volume, that is your c square. Understood na? I hope you understood. This one your pressure exerted by the gas molecule. This is pressure exerted by gas molecules. Pressure exerted by gas molecule in container. कंटेनर के अंदर जितना गैस मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, कंटेनर, तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, ये रहेगा. ओके सो आफ्टर दिस वन बेटा वी कैन फाइंड देयर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर. नाउ प्रेशर एंड एनर्जी वी कैन सी. नेक्स्ट वन यूर प्रेशर एंड एनर्जी. प्रेशर and energy relation.
ओके, प्रेशर और एनर्जी के लिए क्या रिलेशन है? सो प्रेशर हमारे पास क्या आ गया, एज वी नो प्रेशर इक्वल टू यर आवर केम आउट P इक्वल टू यर m/v/c², ये हमारे पास प्रेशर आ गया। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, so kinetic energy K we can write there 1/2 mc²। यस ना, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करें, ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन मोशन आपका 1D मोशन है इन ईयर 1D। ओके, so here mc² we can write there, then per unit volume is we are dividing this one with by V। okay, and by this one relation as you compare beta m/v we can write there in density form ρc²। हम इसको रो भी यूज कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो के फॉर्म में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर, ये आ गया। but now using this one relation for here we can solve this one, as we will solve then here also mass per unit volume again we can write there rho c²। ओके, डेंसिटी की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, नाउ यूजिंग दिस वन हियर रेशियो ऑफ बोथ इक्वेशन, दिस वन आवर वी कैन राइट देयर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन आवर सेकंड इक्वेशन। अंडरस्टूड ना, कहां से आया ये आपका प्रेशर फाइंड किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कन्वर्ट करें, डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगेन हियर आल्सो डेंसिटी। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। यूजिंग दिस वन देन हियर वी कैन राइट देयर बेटा एनर्जी बाय प्रेशर। ओके, 1/2 rho c², 1/3 rho c²। Rho to rho cancel out, this one to this one cancel out, c²। so your kinetic energy P and your 3/2 will be left there। okay, so we can write there this one kinetic energy equal to your 3/2 pressure। this is the relation between energy and pressure। I hope you understood beta। one relation we have solved your pressure के लिए solve किया है, then second year in form of the rho काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, दोनों को क्या है, रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकाल के क्या है हमने सोल्व किया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, योर एनर्जी इक्वल टू 3/2 प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड प्रेशर। नेक्स्ट वन वी कैन फाइंड बेटा रिलेशन फॉर योर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट वन रिलेशन फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिलेशन फॉर pressure and temperature। ओके, सो ये प्रेशर इज केम आउट बेटा, यहाँ पे प्रेशर क्या आया हमारे पास, P इक्वल टू 1/3 mv/c²। ओके, 1/c²। सो हियर वी कैन राइट देयर P इक्वल टू 1/3 m/v/c²। क्लियर, यहाँ पे टेम्परेचर का इसके साथ रिलेशन क्या आ जाएगा, V को इधर लेके जाएंगे, PV इक्वल टू 1/3 mc²। वी कैन राइट और नॉट। ओके, सो PV इक्वल टू mc², PV एज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 mole, then we can write there PV equal to RT। we can write or not, yes na, so PV equal to we can write there RT equal to 1/3 mc², 1/3 mc², like this one we can write there। so T equal to here directly proportional to this one, R is your temperature, P equal to your RT। this one relation came out। after this one we can write there beta energy, kinetic energy we can write there 1/2 mv²। here we can write there per unit volume, that's why we can write there V। and this one here 1/2 rho c²। V को हम क्या यूज कर रहे हैं, C यूज कर रहे हैं वेलोसिटी, that's why here root means square value will be this one। okay, so by using this one relation then here we can write beta that
RT equal to this one. Now here both side, if we will multiply this one with your 2 only, here we can write there, here we can write there 3 PV equal to MC square. Then both side, ये तो रिलेशन आ गया बेटा टेम्परेचर के लिए, ओके, टेम्परेचर रिलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर C स्क्वायर, ओके। RMS वैल्यू के साथ क्या बनाता है, दिस वन योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T, ओके। यहाँ पे हम रिलेशन निकाल रहे हैं इसका काइनेटिक एनर्जी के लिए, सो दिस वन वी कैन टेक दिस साइड, देन हियर बोथ साइड वी विल मल्टीप्लाई देयर 2 only, then here we can write there kinetic energy will be equal to your kinetic energy will be equal to this one your 1/2 MC square, that will be come out 1/2 PV। एक रिलेशन आपके पास कहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं, दिस वन वी आर इरेजिंग दिस वन, नो नीड ऑफ दिस रिलेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक ये रिलेशन आ गया। तो टेम्परेचर का RMS C क्या हमारे पास RMS वैल्यू है, तो C का टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन आ जाएगा 3/2 RT, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा दिस वन। नाउ यू कैन डू इट 3/2. So first we have find out their pressure exerted due to the ideal gases in our container. After that we done some relations, so with the temperature, with the kinetic energy, and their kinetic energy with their pressure. I hope you understood beta. In next class we will discuss next topic. Then thank you for watching today our video.